very good morning, dear student. Okay, so yesterday we have seen the concept of polynomial expression. Okay, so what exactly polynomial is that we have seen? Okay, so polynomial is a term that is a combination of coefficient and exponent. Okay, so there is a example, that is, if you are taking one example, that is, there is a combination of coefficient and exponent, or the degree of polynomial, we can say. Okay, the 4 is what the coefficient, and the 3 will be the exponent of that term. Okay, so for representation of that polynomial using an array, the way is, always remember that जो index represent कर रहे हैं यहाँ पे, index, that is 0, 1, 2, 3, these are the indices of an array. Okay, so उसको हम लोग represent करेंगे as an exponent, or we can say that it is a, what exactly it is? It is the index. Index को ही हम लोग exponent represent करते हैं, and the coefficient will be what the value of that array. Okay, these point we have seen previously. Okay, that is 9, 7, 6, 4. These are the coefficient, and the indices are the exponent of that polynomial. Why? Because suppose if you are taking the first term, that is 4x raised to cube. Okay, how we are representing this polynomial using array? तो सिंगल वेरिएबल, वी कैन से दैट द सिंगल वेरिएबल उसको कैसे रिप्रेजेंट कर रहा है, एरे में उसको रिप्रेजेंट करना है, क्योंकि पॉलिनोमियल को दो टर्म होते हैं, एक्सपोनेंट एंड कोएफिशिएंट, और एरे में हम लोग सिंगल वैल्यू स्टोर कर सकते हैं. दैट्स व्हाई सिंगल वैल्यू मींस वी आर कंटिन्यूअस मेमोरी एलोकेशन स्टोरिंग, बट मुझे कोएफिशिएंट एंड एक्सपोनेंट स्टोर करना होगा, तो कोएफिशिएंट क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, वैल्यू, एंड एक्सपोनेंट विल बी द इंडाइसेस. That's why the first term will be, if we are talking about our first term is, जो हमारी फर्स्ट टर्म है, दैट इज 4x रेज टू क्यूब. तो ये जो 4 है, 4 वैल्यू कहाँ पे स्टोर होगी, इन थर्ड लोकेशन. व्हाई इट इज इन थर्ड लोकेशन? बिकॉज द एक्सपोनेंट और डिग्री ऑफ दैट पॉलिनोमियल इज 3. आई होप एवरीवन इज क्लियर दिस. so this is a representation of single variable or polynomial using an array. Okay, that we have here. Okay, previously, so I want to store both the coefficient and exponent at a time. So there will be the one option for the same, that is array of structure, that we have started. Okay, so before that we have seen the single variable polynomial, what are the different operation manipulation are there that we need to see. Before that, we have cleared the representation of polynomial using array, then array of structure we are going to see, how polynomial evaluation will do, how we are going to perform the polynomial addition, subtraction, these points. Fine. Okay, so these are what the operation, actual ADT of an polynomial that we need to see. Okay, that first one, how to create the polynomial. Okay, how we are going to perform the addition of two polynomials. Similarly, how we are going to do the subtraction, multiplication of two polynomial, and how we are going to perform the polynomial evaluation. These are the basic operation, these are the basic ADT of an polynomial. Okay, that we have clear. Okay, so why polynomial as an array of structure is required? Okay, why it is required? What is the reason behind it? Because I need to store both the terms, कोइफिशिएंट एज वेल एज एक्सपोनेंट. ओके, उसको मुझे स्टोर करना है, तो मुझे एरे ऑफ स्ट्रक्चर यूज करना पड़ेगा. मतलब स्ट्रक्चर कंसेप्ट जो हम लोगों ने कल स्टार्ट किया था, उसमें क्या कॉम्बिनेशन रहेगा, कोइफिशिएंट प्लस एक्सपोनेंट. नाउ दिस पॉइंट इज क्लियर टू एवरीवन. The polynomial is having combination of what, coefficient and exponent. So here is in zeroth location, how we are going to store this कोएफिशिएंट, हाउ वी आर गोइंग टू स्टोर दिस एक्सपोनेंट. ये हम लोगों ने देखा है, एरे में हम लोग सिर्फ सिंगल वैल्यू स्टोर कर सकते हैं, तो ये डबल वैल्यू कैसे स्टोर की, यूजिंग एरे ऑफ स्ट्रक्चर ओनली. ओके, सो दिस पॉइंट इज क्लियर टू एवरीवन. For that I'm giving, we can take, if I want to store the student database. Okay, मुझे क्या स्टोर करना है, स्टूडेंट डेटाबेस, और क्रिएट करना है मुझे स्टूडेंट डेटाबेस. Okay, so how is it possible to do this? Okay, student database I need to create it, but उसके लिए क्या क्या important है, that is the सब important part, that is very important. Student के कौन से attributes हम लोगों को लेने हैं. Okay, that is student क्या आएगा, stud underscore roll number आएगा. Okay, first one is what, student underscore roll number. Then क्या आएगा, student name. Okay, we have to take क्या क्या database में आएगा, student roll number, student name. Then next क्या आएगा, next one student mobile number. Okay, student address. Okay,
The mobile number we are going to take here. Okay. Next one will be I need to take student address. Okay. I need to take student address here. Okay. So uh, these total number of field, let's say 1, 2, 3, 4, 5 fields I need to store. Okay. Suppose ये 5 field मुझे store करने हैं और मैंने क्या किया स्टूडेंट का सिर्फ वन सिंगल एरे यूज किया लेट्स से स्टूडेंट इंटीजर स्टूडेंट ऐसे करके मैंने एरे यूज किया सपोज दिस इज द साइज ऑफ दैट एरे विल बी व्हाट लेट्स से 10 ओके फाइन सो यहाँ तक क्लियर हुआ सब लोगों को ओके सो यहाँ पे मैंने क्या किया इंटीजर स्टूडेंट 10 इतनी साइन मैंने इतना वेरिएबल यूज किया so tell me student here we are going to store only the integer value here but मुझे स्टूडेंट का क्या क्या स्टोर करना है रोल नंबर स्टोर करना है नेम स्टोर करना है मोबाइल नंबर एड्रेस स्टोर करना है सो इज इट पॉसिबल टू स्टोर इनटू इन एरे यस इट्स पॉसिबल करते हो इफ इट इज आई एम टेकिंग अबाउट रोल नंबर 1 जो स्टूडेंट का रिकॉर्ड है रोल नंबर 1 ये जो रिकॉर्ड है कौन से फर्स्ट स्टूडेंट का रोल नंबर 1 का पूरा डेटा मुझे स्टोर करना है ये फर्स्ट लोकेशन में लेट्स से लोकेशन विल बी द 0 ओके यहाँ पे लोकेशन क्या आएगा 0 लोकेशन ओके 0 लोकेशन में यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रही हूँ दिस इज 0 लोकेशन फाइन ओके 0 लोकेशन में रोल नंबर 1 की सारी इंफॉर्मेशन स्टोर करनी है उसका क्या आना चाहिए दैट इज रोल नंबर ओके देन उसका नाम आना चाहिए देन उसका मोबाइल नंबर स्टोर होना चाहिए ओके उसके बाद उसका एड्रेस स्टोर होना चाहिए आई नीड टू स्टोर दिस फोर फील्ड रोल नंबर नेम देन मोबाइल नंबर एंड एड्रेस दिस फोर फील्ड आई नीड टू स्टोर इन सिंगल लोकेशन तो ये एरे से पॉसिबल नहीं है इसीलिए उसको एरे ऑफ स्ट्रक्चर में रिप्रेजेंट किया इसका मतलब है स्ट्रक्चर में हम लोग डिसिमिलर टाइप ऑफ डेटा कंबाइन कर सकते हैं तो यहाँ पे स्टूडेंट का स्ट्रक्चर कैसे बनेगा ये देखो 0 लोकेशन में रोल नंबर 1 का 1 लोकेशन में मैं सेकंड स्टूडेंट का क्या कर रही हूँ यहाँ पे सेकंड सपोज 1 लोकेशन में मैं रोल नंबर 2 स्टोर कर रही हूँ क्या स्टोर कर रही हूँ यहाँ पे रोल नंबर 2 हियर ओके और उसका क्या फिर से डेटा डिटेल्स आएंगे सपोज उसका रोल नंबर 2 है उसका नाम है लेट्स से अदिति ओके एंड उसका मोबाइल नंबर है जैसे 982307 okay this is the roll number of okay so likewise I have to store hold the record of one location okay so ये सिर्फ पॉसिबल है कहाँ पे स्ट्रक्चर में इसीलिए 0 लोकेशन में एक वैल्यू है 1 लोकेशन में एक वैल्यू है ऐसे जितने टोटल नंबर ऑफ लेट्स से आपकी क्लास में कितनी स्ट्रेंथ है लेट्स से 68 और 69 इज द स्ट्रेंथ ओके सो टोटल मुझे रोल नंबर सपोज मुझे मैं क्या करूंगी 69 है इसका मतलब है लेट्स से 69 68 लोकेशन पे मेरा लोकेशन में लास्ट स्टूडेंट का पूरा इंफॉर्मेशन स्टोर रहेगा सो हाउ इज इट पॉसिबल आई एम स्टोरिंग इन वन लोकेशन होल्ड द रिकॉर्ड ऑफ वन स्टूडेंट सेकेंड लोकेशन में मैंने पूरे रोल नंबर 2 का जो है सेकेंड स्टूडेंट है उसका पूरा रिकॉर्ड स्टोर किया सो ये सिर्फ पॉसिबल है यूजिंग स्ट्रक्चर और क्लास ओके सो स्ट्रक्चर कैसे बनेगा दैट इज स्ट्रक्ट कीवर्ड नेम ऑफ द स्ट्रक्चर दैट इज स्टूडेंट enter I need to start curly bracket here curly bracket I need to end यहाँ पे कौन से फील्ड आएंगे दैट इज मैंने अभी यहाँ पे डिक्लेयर किए हैं दैट इज रोल नंबर नेम ये सारे जो भी है एक स्ट्रक्चर में मैं डिसिमिलर टाइप ऑफ डेटा उसमें स्टोर कर सकती हूँ ये पूरे मैंने यहाँ पे डिक्लेयर किए दैट इज इंटीजर रोल नंबर ओके डोंट कॉन्सेंट्रेट ऑन आई इज कैपिटल एंड ऑल बिकॉज आई एम डूइंग इन वर्ड पैक राइट इंटीजर रोल नंबर देन कैरेक्टर नेम का मैं क्या कर सकती हूँ यहाँ पे लेट्स से सी प्लस प्लस में पॉसिबल है डायरेक्टली स्ट्रिंग क्लास हम लोग यूज कर सकते हैं मैंने कैरेक्टर टाइप ऑफ एरे लिया फॉर स्टोरिंग द नेम देन अगेन सपोज मैं यूज कर रही हूँ डबल और लॉन्ग लॉन्ग डेटा स्ट्रक्चर लॉन्ग डेटा टाइप फॉर स्टोरिंग द मोबाइल नंबर एंड एड्रेस के लिए भी मैं क्या कर रही हूँ लॉन्ग यूज कर रही हूँ आई फॉर स्टोरिंग द लार्जेस्ट वैल्यू ओके सो हियर जस्ट कॉन्सेंट्रेट हियर ये स्ट्रक्चर मैंने बनाया है स्ट्रक्ट स्टूडेंट उसमें मुझे क्या बोला मैंने मुझे 4 फील्ड स्टोर करनी है दैट्स व्हाई दिस आर द स्ट्रक्चर वेरिएबल दिस इज कॉल्ड एज व्हाट ये क्या हो गया स्ट्रक्चर वेरिएबल ओके अभी मुझे इसको एक्सेस करना होगा तो मुझे स्ट्रक्चर का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा जैसे आप क्लास का बनाते हो तो यहाँ पे मैं क्या बोल रही हूँ S1 ऑफ इट इज एरे ऑफ स्ट्रक्चर इसलिए मैंने यहाँ पे 10 और लेट से हमारे क्लास में कितने स्टूडेंट है 68 स्टूडेंट तो मैं यहाँ पे बोल रही हूँ टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने होने चाहिए 68 ओके तो ये टोटल नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स कितने क्रिएट होंगे टोटल 68
इसका मतलब है यहाँ पे जो मैंने डिक्लेयर किया है रोल नंबर 1 टू रोल नंबर 68 तक मुझे सारे रिकॉर्ड स्टोर करने हैं। ओके, सो ये रोल नंबर 0 से स्टार्ट हो रहे हैं। इसका मतलब है पर्टिकुलर लोकेशन में मैं क्या कर रही हूँ, एक रोल स्टूडेंट का पूरा रिकॉर्ड स्टोर कर रही हूँ, और ये सिर्फ पॉसिबल है यूजिंग स्ट्रक्चर। इसका मीनिंग ये हुआ कि S1 ऑफ 0th लोकेशन में, यहाँ पे मैंने जो मतलब कितने रिकॉर्ड बनेंगे, ऐसे 68 रिकॉर्ड बनेंगे। इज इट क्लियर टू एवरीवन? Here we are creating the 68 records here. Okay. Similarly यहाँ पे रोल नंबर लेट से मैं बोलती हूँ 68, ये रोल नंबर है, उसका नाम है लेट से मैं बोल रही हूँ राहुल। राहुल is the name of that student. This is a mobile number that is okay. ओके, दिस इज अ मोबाइल नंबर ऑफ दैट स्टूडेंट। सो ऐसे में कितने टोटल 68 रिकॉर्ड क्रिएट कर रही हूँ, और ये रिकॉर्ड पॉसिबल किससे है, यूजिंग स्ट्रक्चर ओनली। आई होप एवरीवन इज क्लियर नाउ। तो 68 जो भी है मतलब S1 ऑफ 0, अभी मैं बोल रही हूँ मुझे उसको एक्सेस करना है, तो कैसे आएगा, S1 ऑफ 0th लोकेशन में कौन आएगा, S1 ऑफ 0 डॉट मैं क्या बोलूंगी, रोल नंबर। मतलब स्ट्रक्चर के एलिमेंट मुझे एक्सेस करने होंगे, तो डॉट ऑपरेटर थ्रू मैं उसको एक्सेस करती हूँ। समझ में आ रहा है? सिमिलरली मुझे उसका रोल नंबर एक्सेस किया, सिमिलरली S1 ऑफ 0th लोकेशन में कौन है मेरा, S1 ऑफ 0th लोकेशन डॉट नेक्स्ट वेरिएबल कौन सा है, नेक्स्ट पैरामीटर कौन सा है, नेक्स्ट वैल्यू कौन सी है, दैट इज स्टूडेंट नेम। तो मैं कैसे एक्सेस करूंगी उसको, स्टूड अंडरस्कोर नेम लाइक दिस। I hope everyone is clear this. So likewise, I am accessing the element from that structure. Okay. इसका मतलब है ये जो मैंने जीरो लोकेशन दिया, ये जीरो लोकेशन मतलब आपका क्या हो गया, S1 ऑफ 0। क्लियर? मतलब S1 ऑफ 0 लोकेशन में फर्स्ट स्टूडेंट का डेटा स्टोर्ड है। Got it everyone? Similarly, S1 of 1 लोकेशन में सेकेंड स्टूडेंट का रिकॉर्ड स्टोर्ड है। S1 of 1 मतलब सेकंड लोकेशन में, और वी कैन से दैट 1 लोकेशन में सेकंड रोल नंबर जो 2 है उसका पूरा रिकॉर्ड स्टोर है। लाइकवाइज वी आर स्टोरिंग द रिकॉर्ड, लेट्स से आई एम गिविंग नेक्स्ट एग्जांपल, दैट इज लेट्स से S3 S2 सॉरी S1 वो ऑब्जेक्ट का नेम है, S1 ऑफ 2 लोकेशन पे थर्ड स्टूडेंट का रोल नंबर उसका पूरा रिकॉर्ड स्टोर है। मींस आई एम गोइंग टू स्टोर इन पर्टिकुलर लोकेशन होल डिटेल्स ऑफ दैट स्टूडेंट। ओके, मतलब इसको बोला जाता है इन टेक्निकल वर्ड, दिस इज द कंसेप्ट ऑफ रिकॉर्ड। मैं क्या कर रही हूँ, पूरे रिकॉर्ड को स्टोर कर रही हूँ। बट एरे में पॉसिबल है क्या स्टोर करना, इट्स नॉट पॉसिबल टू स्टोर होल रिकॉर्ड इन वन एरे, दैट्स व्हाई वी आर यूजिंग एरे ऑफ स्ट्रक्चर हियर। Okay, I hope everyone clear this point. Everyone clear it. Okay, now we focus on the same concept in array of structure for polynomial. Okay, so polynomial in that this zero represent the index of that array. Okay, array of structure हम लोगों ने बनाया है, कितने total number of मुझे क्या करने हैं, polynomial के terms बनाने हैं, that I need to give first, and the first term will be the coefficient, second term will be the exponent. This is the memory representation of that polynomial. Okay, if you want to store, if anybody asks the question, ma'am, can I store in continuous array? Let's say in array we can store. Okay, here we can store continuous memory allocation. That is, suppose आपने particular एक array यूज किया, और एक ही array में आपने क्या किया है, मान लो मैंने यहाँ पे पॉली का एक array यूज किया, पॉलिनोमियल पॉली, उसका एक array यूज किया, पॉली ये जो array का नाम है, और उसमें मैंने बोला कि आपको कितने वैल्यू स्टोर करने हैं, इंटीजर array किया मैंने यहाँ पे, वी आर यूजिंग इंट पॉली, और उसके अंदर मैंने 30 साइज का पॉलिनोमियल यूज किया। ओके, तो यहाँ पे आई एम यूजिंग इट। सो आपको लग रहा है मैडम एक ही एरे में मैं कोएफिशिएंट एक्सपोनेंट स्टोर कर सकता हूँ, इज इट पॉसिबल? यस, इट्स 100% पॉसिबल, बट उसका स्ट्रक्चर थोड़ा जो रहेगा वो डिफरेंट रहेगा। लेट्स से मैं यहाँ पे एक ये कर रही हूँ, लेट्स से ये मान लो ये एरे है अपना, तो एरे के फर्स्ट लोकेशन में आप क्या कर सकते हो, एक्सपोनेंट स्टोर कर सकते हो पहले लोकेशन में। मान लो ये 0 लोकेशन में मैंने क्या स्टोर किया, आई एम स्टोरिंग 0 लोकेशन फॉर एक्सपोनेंट ऑफ फर्स्ट टर्म, सेकेंड लोकेशन दैट इज कोएफिशिएंट। ओके, नेक्स्ट लोकेशन में मैंने क्या स्टोर किया, इन फर्स्ट लोकेशन आई एम स्टोरिंग हियर द कोएफिशिएंट। ओके, of first term. Okay, then exponent coefficient store किया next location में, that is second location में I am going to store, okay, the exponent of second term। समझ में आ रहा है? तो ये जो exponent मैंने store किया है वो किसका है, that is first term। okay, first term का मैंने exponent and coefficient store किया है दोनों।
सिमिलरली मैं यहाँ पे एक्सपोनेंट स्टोर कर सकती हूँ, दैट इज the exponent will be what second term. Okay, likewise you can create the polynomial. ऐसा नहीं है कि इस वे से नहीं होगा, you can develop the code according to it, क्योंकि एरे में आपको क्या स्टोर करना है, पहले किसको स्टोर करना है और सेकेंडली किसको स्टोर करना है, डिपेंड्स अपॉन यू. हम लोग अकॉर्डिंग टू दिस भी क्या कर सकते हैं, सिंगल एरे में कोएफिशिएंट एक्सपोनेंट स्टोर कर सकते हैं. बट इफ यू वांट टू परफॉर्म द डिफरेंट ऑपरेशन ऑफ व्हाट पॉलिनोमियल की जो ऑपरेशंस परफॉर्म करने, दैट इज एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, दीज ऑपरेशन वी नीड टू परफॉर्म. फॉर दैट इट्स नॉट पॉसिबल टू डू इन सिंगल एरे. व्हाट इज व्हाट आई एम सेइंग, यहाँ पे उसका ड्रॉबैक क्या है वो क्लियर करो. हम लोग सिंगल एरे में भी डायरेक्टली कोएफिशिएंट एक्सपोनेंट इजीली स्टोर कर सकते हैं. बट इफ यू वांट टू परफॉर्म द ऑपरेशन, that is different operations on polynomial, that is addition, multiplication, subtraction, is not possible into in single array. That's why we are using array of structure. Only one change is there. Instead of struct we are using class, because class is also user defined data type. इसमें भी हम लोग different data members ले सकते हैं, that is integer, float, character, whatever you want. And similarly you can create the object of क्लास here, जैसे हम लोग स्ट्रक्चर में करते हैं वैसे क्लास में भी कर सकते हैं. तो सेम कोड वी कैन रिप्रेजेंट इन C++ here. Okay, now this part I hope everyone is clear how the polynomial will start. So here we take the struct poly. Okay, there is two variables here, that is integer, exponent and coefficient. We have started program in main. Okay, so main में हम लोगों ने डिक्लेयर किया है, ये देखो struct poly p1 of max. Okay, so how many size required this p1? ये देखो, yes, how many size, कितनी साइज होगी यहाँ पे p1 ऑफ मैक्स की. ये देखो जितनी साइज स्ट्रक्चर की है, स्ट्रक्चर की साइज कितनी होगी यहाँ पे, हाउ मच साइज फॉर दैट स्ट्रक्चर, इंटीजर एक्सपोनेंट फॉर 2 बाइट्स, इंटीजर कोएफिशिएंट फॉर 2 बाइट्स, टोटल 4 बाइट्स. सो ये p1 ऑफ मैक्स कितने साइज का हो जाएगा, टोटल 4 बाइट्स का. मतलब जितनी साइज, जितने वेरिएबल हम लोग स्ट्रक्चर में डिक्लेयर करते हैं, उतनी साइज उसको, उस ऑब्जेक्ट को अलोकेट हो जाती है. Why? Because क्योंकि उसके थ्रू ही हम लोग उसके मेंबर्स एक्सेस करते हैं. Clear to everyone? Fine. So that's why we are declare here struct keyword name of the structure, that is poly, and we are declaring the object of that structure here. Okay, we can say that a structure variable here. Fine. So now we have started previously the program of polynomial. So first we have entered the element of enter the polynomial expression, display the polynomial expression here, and evaluation of that polynomial that we have seen. So first we have to enter the term of first polynomial, means how many terms we want to enter into the first polynomial, that we need to scan. I'm using the variable is nt1. Why I'm using n instead of t1, that is this is integer variable, that's why numerical variable, that's why I'm using n here. Okay, so I want to access the element into that very structure, that's why it required the name of the first polynomial, that is p1 I dot the variable of first structure, that is n coefficient, and second one was n exponent, that we have cleared using one particular example. Fine everyone? Okay. Now here we are entering the first term of polynomial. Okay. Similarly, we have to enter the second term of polynomial. Okay. Again, we are what, scanning it. Okay. हम लोग क्या कर रहे हैं, उसको second term को भी क्या कर रहे हैं, similar first polynomial के term का variable है p1, तो second का है p2, और जितने total number of terms है वो सारे scan करने हैं. That's why we are using for loop here. I hope there is no problem regarding for loop now. Okay. Next. Then we second choice case 2 will be what, display purpose. Okay, so we have to display that whole polynomial. So here we are going to display it. Okay, second case we just instead of scanf we have to print. You can do this code in C++, no problem. So we have to display, just pass p1 or I dot n coefficient and n exponent. Okay, so this is your second polynomial also. Okay, we have displayed the both, fine. Now the third case is what? What is the third case here? Third case for evaluation. Evaluation means what? We have to put the value of x term. जो x variable है उसमें हमें क्या करना है, वैल्यू डाल के उसको कैलकुलेट करना है. So that's why we are using in case 3, just concentrate. I'm enter the value of x here. x की वैल्यू हम लोगों ने nx में स्कैन करके रखी है. Fine everyone? Okay. Now I want to
putting the value of that x and I have to perform the addition there. Okay, that's why n sum नाम का variable लिया है. The initialize the value will be 0. Okay, then we are going into the for loop. Just concentrate here. We are using power of function. So power function used in math.h. It gives nx. nx में जो x की वैल्यू हम लोग पुट करेंगे वो वैल्यू किसको चली जाएंगी, एक्सपोनेंट की चली जाएंगी. फिर उसका मल्टीप्लीकेशन, उसका एग्जीक्यूशन होने के बाद हम लोग उसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, उसको कोएफिशिएंट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर उसकी एडिशन सम नाम के वेरिएबल में स्टोर हो जाएगी. और सिंपली वी आर डिस्प्लेइंग इट, इवैल्यूएशन ऑफ दैट फर्स्ट पॉलिनोमियल इज वी आर स्टोरिंग द रिजल्ट हियर. जैसे हम लोगों ने फर्स्ट पॉलिनोमियल के लिए किया, सिमिलरली वी हैव टू डू फॉर सेकंड पॉलिनोमियल. आई होप क्लियर दिस. Again, I am revising here. When I want to evaluate the polynomial expression here, that is x, what is the important? I have to put the x की वैल्यू पहले एंटर करनी पड़ेगी. Then for loop में हम लोगों ने पावर ऑफ फंक्शन यूज किया है. पावर फंक्शन का यूज क्या है, जो हमारा एन एक्स जो वेरिएबल है, x की जो वैल्यू हम लोग पुट कर रहे हैं वो किसको जानी चाहिए, डिग्री ऑफ दैट पॉलिनोमियल, दैट इज एक्सपोनेंट. उसका क्या होगा, मल्टीप्लीकेशन होगा किसके साथ, कोएफिशिएंट के साथ. Then we are storing the result into the sum. Got it? Finally, we are running the program that you can again the clear whole the task. Okay, fine. Now we concentrate on the next part, that is addition part. Okay, so when case 4 will be for the addition. Just concentrate. Addition and subtraction both are the same, only the sign is different. Okay, so addition कैसे होगा वो भी हम लोग देख लेते हैं. Addition में सबसे important part है, what is the important part here? Addition करते वक्त polynomial की जब addition हम लोग करते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है, व्हाट इज द कंडीशन हियर. कंडीशन इज गिवन इन इफ लूप हियर. दो पॉलिनोमियल टर्म की जब हम लोग एडिशन करते हैं, एट दैट टाइम वी हैव टू चेक द एक्सपोनेंट हियर. दोनों का एक्सपोनेंट सेम रहेगा. लेट्स से p1 ऑफ i डॉट एक्सपोनेंट इक्वल टू p2 ऑफ j ऑफ एक्सपोनेंट. आई होप एवरीवन इज क्लियर. द p1 फॉर फर्स्ट पॉलिनोमियल एंड p2 इज सेकंड पॉलिनोमियल. ओके, सो दोनों का एक्सपोनेंट सेम होगा तो क्या करेंगे हम लोग, वी आर यूजिंग द रिजल्टेंट पॉलिनोमियल दैट इज p3. उसका सबस्क्रिप्ट कौन है, वेरिएबल k. तो क्या होगा, कोएफिशिएंट की एडिशन होगी. दैट्स व्हाई वी आर डूइंग p1 i डॉट n कोएफिशिएंट प्लस p2 j डॉट कोएफिशिएंट. दोनों की एडिशन होके हम लोग थर्ड इसमें उसको स्टोर करेंगे. सिमिलरली क्या होगा, एक्सपोनेंट एज इट इज हम लोग उसको असाइन कर देते हैं. दैट्स व्हाई p1 का एक्सपोनेंट दो, इधर p2 को दो, वन एंड द सेम थिंग, क्योंकि दोनों का एक्सपोनेंट सेम है. समझ में आ रहा है. जैसे आप लोग कितने तीन टर्म्स है तो तीन टर्म के करने हैं. दैट्स व्हाई वी आर डूइंग i प्लस प्लस, j प्लस प्लस एंड k प्लस प्लस, क्योंकि रिजल्टेंट भी हमें इंक्रीमेंट करना है. एंड वी आर यूजिंग व्हाइल लूप हियर. व्हाइल लूप इज मोर सफिशिएंट फॉर दिस कोड. व्हाई, बिकॉज क्योंकि जितने टोटल नंबर ऑफ टर्म्स है उतनों के लिए मुझे करना है. दैट्स व्हाई हम लोगों ने यहाँ पे कंडीशन डाल दिया और यहाँ पे एग्जीक्यूशन किया. समझ में आ रहा है. यहाँ पे द फर्स्ट कंडीशन शुड बी क्लियर टू ऑल हियर. सिमिलर टर्म का हम लोग एडिशन करेंगे, बट जो डिसिमिलर है उसको भी एज इट इज हमें रिजल्टेंट पॉलिनोमियल में डालना पड़ेगा. दैट्स व्हाई वी आर यूजिंग दिस. सपोज फर्स्ट टर्म का पॉलिनोमियल का जो एक्सपोनेंट है, लेट्स से सेकंड टर्म का, वो फर्स्ट पॉलिनोमियल के सेकंड टर्म का एक्सपोनेंट बड़ा होगा अकॉर्डिंग टू द सेकंड पॉलिनोमियल ऑफ एक्सपोनेंट. सो डायरेक्टली क्या करेगा, रिजल्टेंट पॉलिनोमियल में एज इट इज कॉपी हो जाएगा. तो उसका p1 i डॉट कोएफिशिएंट है वो डायरेक्टली p3 में चला जाएगा. सिमिलरली उसका जो एक्सपोनेंट है वो भी एज इट इज चला जाएगा. एंड वी हैव टू डू द i प्लस प्लस k प्लस प्लस हियर. व्हाई, बिकॉज वी आर इंक्रीमेंटिंग द लोकेशन हियर. फाइन. जैसे हम लोग फॉर लूप में डालते हैं, व्हाइल लूप कैसे होता है, व्हाइल लूप में हम लोग giving the while loop in condition and we are incrementing the counter within a while loop only. I hope everyone is clear. So that's why we are doing this. Similarly, यही उसका रिवर्स होगा. तो सपोज p2 का कोएफिशिएंट, और कोएफिशिएंट क्या रहेगा, इसका एल्स क्या पार्ट आएगा, ग्रेटेस्ट रहेगा p1 से, तो वो एज इट इज कॉपी होगा. दैट्स इट. वही कोड यहाँ पे किया है एंड दैट वी आर डूइंग द सेम थिंग हियर. ओके, सारे टर्म चेक करने, दैट्स व्हाई वी आर यूजिंग while loop here again. Okay, so ये कोड पहले हम लोग रन करके देखते हैं so that you can easily clear this, and we finally simply the displaying the addition of that polynomial. Clear? क्योंकि हम लोग डिस्प्ले किस में कर रहे हैं, p3 में. That's why we are displaying the for loop. और उसका सबस्क्रिप्ट कौन था, k में वैल्यू स्टोर कर रहे थे, इसलिए फॉर लूप में वो फॉर लूप कहाँ तक चलेगा, k तक चलेगा. एंड इट विल डायरेक्टली द डिस्प्ले ऑफ रिजल्टेंट पॉलिनोमियल हियर. Okay, so the
Yes, I'm asking the question.